going to continue with our regular topic. It is a title for difference between means. So the standard error is calculated as, so what is this difference between means and what is standard error? So these are the two topics which are connected with our previous session where we have seen the concept of large sampling. And when we have seen the concept of large sampling, we are moving into the connected part after completion of chi-square test. फर्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस पे उसमें से एक टॉपिक हमने छोड़ा था विच इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट वन सो आर स्टार्टिंग विद दैट पार्ट सो व्हाट आर ऑब्जर्विंग ऑन द स्क्रीन द सेम फॉर्मूला विच आर ऑलरेडी फॉरवर्डेड टू अवर ग्रुप होप्स आप सबने कॉपी करके रखा होगा चलिए इसके साथ शुरू करते हैं फर्स्ट टाइटल इज डिफरेंस बिटवीन मीन्स इफ यू आर गेटिंग एनी डिस्टर्बेंस इन साउंड या वीडियो क्वालिटी प्लीज रिप्लाई मी इन द चार्ट Sound okay, sir? If you have any problem, please reply me in the chat. So what I'm observing the title is the difference between means. What is difference between means? The first point is standard error. So what is standard error? Represented by maximum time वो कैपिटल AC से भी रिप्रेजेंट करते हैं आज हम लोग उसे कैपिटल S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं So we can say standard error that is S या SE can be given by, so the formula is available in front of us. Are you observing that formula? Yes. What is the important one? I am going to highlight that first part. Standard error is given by the formula S is equal to sigma into square root of 1 upon n1 plus 1 upon n2. सर टाइटल हमें बताता है कि कंसेप्ट क्या है जब अपने पास एक ही सैंपल था तो हम लोग ऊपर के टाइप के न्यूमेरिकल्स करते थे जब सैंपल में एक से ज़्यादा के टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे जब सैंपल में एक से ज़्यादा के टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे दोस्तों तो वी कैन से वी आर हैविंग टू डाटास टू सैंपल स्पेसेस इट इज n1 and n2 respectively and we can say it is sigma into root of 1 upon n1 plus 1 upon n2. Second one, again we are going to find out the value of z. It is similar to previous formulas only. Be careful. Now we are having two means. तो पहले सैंपल का मीन होगा x1 बार and we can assume any one sample as x1 and x1 bar and x2 बार. सेकंड सैंपल का मीन होगा x2 बार. सो एक का मीन हमें मिला x1 बार फर्स्ट सैंपल का एंड दूसरे का हमें मिला x2 बार जिनका यूज करके हम लोग आगे जा सकते हैं सही बात है So what we can say by having another formula where we can say z is given by mod of x1 bar minus x2 bar whole divided by sigma into root of 1 upon n1 plus 1 upon n2. So are you getting me? Yes, it is nothing but the same value what you are observing here. S is given by sigma into root of 1 upon n1 plus 1 upon n2. So sometimes they will show us formula by writing a detailed step. Yeah, sometimes it can be represented by S. Yeah, it can be represented by AC. It is nothing but standard error. So ये टाइप हम लोग कभी यूज करेंगे ये टाइप हम लोग तभी यूज करेंगे जब अपने पास एक से ज्यादा सैंपल्स अवेलेबल है एंड तभी दोनों सैंपल्स के जो इंडिविजुअल मीन्स है x1 बार एंड x2 बार एंड दोनों का हमने डिफरेंस लिया है एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज दिस पार्ट आर यू गेटिंग द पार्ट गुड नेक्स्ट वन another second type which is available in this please be careful for the second part if n1 and n2 are sufficiently large if n1 and n2 are sufficiently large and sigma 1 and sigma 1 is replaced by s1 and sigma 2 is replaced by s2 so what is the change पहले sigma 1 आता था एंड अभी सिग्मा 2 आता था अभी दोनों के जगह पे हमें s1 एंड s2 देखने को मिलेगा जब n1 एंड n2 बहुत ही sufficiently large values होंगे तो श्योर इन सच केसेस प्रॉब्लम तो ये है कि हमें AC चाहिए हमें AC ही चाहिए S बोलो कि SE बोलो दोनों का मतलब क्या है सेम है दोनों का मतलब क्या है सेम है इट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड एरर एंड उसको हम लोग ये नीचे के मेथड से ढूंढना चाहेंगे सो
क्या है वो नीचे का मेथड? यू कैन हाईलाइट ऑन योर स्क्रीन. आई एम हाईलाइटिंग इट. Same thing on our screen. What is that part? S is equal to root of sigma 1 square upon n1 square plus sigma 2 square upon n2 square. That is one formula. Yeah, अगर S1 S2 उन्होंने दिया है तो no problem. We are just replacing sigma 1 and sigma 2 by S1 and S2, but the formula remain the same. Are you getting what I'm talking about? सो व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी? ये टॉपिक किसके लिए है? ये टॉपिक वो पार्ट है लार्ज सैंपलिंग का, चाय स्क्वायर के बाद का, जब हम लोग लार्ज सैंपल मतलब 30 से ज्यादा के वक्त पे हम लोग जब डील करते हैं तो हम लोग उसे लार्ज सैंपल कहते हैं. एंड जब ये लार्ज सैंपल में एक ही सैंपल अवेलेबल था तो हमने प्रीवियस वीडियो आप प्लीज देखिए, आप उस गो थ्रू दैट वीडियो जो इसके ऊपर मैंने अवेलेबल करके दिया है. वहां पे हमें वो सिंगल सैंपल के सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे. अभी जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, अभी जो हम लोग लेक्चर पढ़ रहे हैं, इसमें क्या दिख रहा है हमें? इसमें हम लोग देख रहे हैं कि भाई दो सैंपल्स अवेलेबल है एंड दो सैंपल्स का हमें इंडिविजुअल मीन्स भी अवेलेबल है एंड अभी उनका हमें उन्होंने डिफरेंस दिया है. क्या दिया है दोस्तों? उन्होंने डिफरेंस दिया है मीन्स का. तो हमने उसका फॉर्मूला देखा. मैं अगेन स्क्रीन पे आइए, मैं उसे हाईलाइट करता हूँ. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. Sure, S is given by formula sigma standard deviation into root of 1 upon n1 plus 1 upon n2, or otherwise Z can be calculated, test characteristics can be calculated by using another formula. You can see the formula Z is equal to mod of x1 bar minus x2 bar upon sigma into root of 1 upon n1 plus 1 upon n2. Here we can replace the same point by S also, या sometimes it can be AC also. That is standard error. सेकंड टाइप, अगर n1 n2 आपकी सफिशिएंटली लार्ज है एंड सपोज उन्होंने हमें दो अलग से सिग्मा भी दिए हैं. पहले केस में एक ही सिग्मा था, काम हो गया. अभी दो n1 n2 के दो सैंपल्स के अलग अलग सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 अवेलेबल है. Now the question will be how to find out that S. तो S का another formula सर ने यहाँ पे नीचे दिया है. S can be calculated by formula S is equal to root of sigma 1 square upon n1 square, sorry n1, I'm so sorry, plus sigma 2 square upon n2. Are you getting that part? Yes. Similarly, कभी कभी वो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 देने की जगह पे वो हमें S1 एंड S2 देते हैं. क्या देते हैं दोस्तों? S1 एंड S2 देते हैं. एट दैट टाइम हमें क्या करना है? जस्ट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 के साथ S1 S2 रिप्लेस कर दो, द फॉर्मूला रिमेन सेम. होप सो इफ यू आर हैविंग नाउ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मूलाज वी कैन इजीली मूव इनटू द सॉल्यूशन. चलिए न्यूमेरिकल्स के साथ शुरू करते हैं दोस्तों. पक्का शुरू करेंगे? आर यू गेटिंग दैट पार्ट? श्योर, फॉर्मूलाज हो गए. नाउ प्लीज सी द न्यूमेरिकल. The first question is how to identify कि this is a separate type. चलिए न्यूमेरिकल पढ़ते हैं. क्या न्यूमेरिकल दिया उन्होंने? सर पहले वर्डिंग में समझ में आता है. हाउ मेनी सैंपल्स आर ड्रॉन? कैन से 2 सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉपुलेशंस. बी केयरफुल. अभी सैंपल्स अलग है, उनके पॉपुलेशंस भी अलग है. सो 2 सैंपल है, 2 पॉपुलेशंस. आर यू गेटिंग इट? बढ़िया. आगे आइए. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? इट टेल्स मी सैंपल 1 size is 300, sample 2 size is 250, mean 87, mean 84. मतलब sample 1 के लिए we can say we are having data with us. Same thing, नीचे के sample 2 का अपना डाटा अवेलेबल है. पक्का 100% समझ में आया सबको? So we are having both the datas. sample 1 का यहाँ पे है. कोई दोस्त मुझे बताना चाहेगा इसका नाम क्या होगा? By common sense, it will be n1. By common sense, this will be n2. Sir, mean है anybody? It is x1 bar. ये second mean है, it is x2 bar. Sure. Standard deviation ready-made दिया है sigma 1. Standard deviation दिया है sigma 2. Are you getting the part? Question समझ में आया? कैसे identify करने का, कैसे find out करने का? चलिए आगे आते हैं and हम लोग इसे मिटा के वापिस चलते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ. सो नाउ द क्वेश्चन इज अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ अस. पक्का शुरू करेंगे उसे वापिस? यस सर. सो क्वेश्चन इज अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ अस. सैंपल 1 n1 n2 है, मीन x1 बार x2 बार है, स्टैंडर्ड डिविएशन बट वी कैन से सिग्मा 1 सिग्मा 2 अवेलेबल है. एंड नाउ दे आर गिवन अस फाइंड द
95%, use the 95% confidence limit and for the difference between टू पॉपुलेशन मीन्स, मतलब उन्होंने सीधा सीधा हमें बोला है कि दो पॉपुलेशन मीन्स का डिफरेंस निकाल के भाई साहब हमें आगे आना है। तो हम लोग आ गए। वी कैन से z इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 बार माइनस x2 बार अपॉन रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2 एंड वी कैन से नाउ वी कैन स्टार्ट विद अवर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें याद आया अपना बेसिक फॉर्मूला जिसके साथ हमने काम किया था। व्हाट इज x1 बार? x1 bar is first value 87. What is x2 bar? It is second value. Yes, it is 84. We have written in that part. Take out your calculator, be quick. I have not substituted all those values. It will be in front of us. What is sigma 1? It is 10. What is n1? It is 300. What is sigma 2? It is 8. Be careful. What is sigma 2? It is 8. What is n2? It is 250. Are you getting the things? पक्का समझ में आ रहा है? चलिए, I am waiting for your calculations. We are not going to just make some presentation. We are going to teach the concept. We are going to learn the part. पहले भी पढ़ा है तो रिवाइज होगा. सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है. So we will be in touch with it. अगर कोई फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है उसे बाय कैलकुलेशन भी समझ में आएगा. I am giving that much time in the session, in the lecture. So are you getting that answer? समझ में आया आंसर? सबको मिल रहा है आंसर? Sure. Should I rub the answer? Yes, मैंने आंसर को बंद करके रखा है. Can anybody tell me that answer? What is the answer which is available with us? The wedge is with 3.91. Very good, the wedge. Come on, anyone? Any other boy? It is 0.77. चलिए आगे आते हैं and we'll check it out whether the wedge Siddesh. Yes, everybody is getting the correct answer. So we are happy to see that part कि बच्चों के आंसर आ रहे हैं और वो सही है. So you can say z is equal to 3.91. अभी कंसेप्ट समझ में आया सब बच्चों को? करना क्या है? ऋतिक जी, वेरी गुड ऋतिक, यू आर इन द सेशन. अच्छा है आपको देख के, वेरी गुड. सो बढ़िया है, वेरी गुड. आई एम वेटिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. प्लीज कम, डू इट फास्ट. चलिए जाएंगे आगे. सर कॉन्फिडेंस लिमिट्स विच आर मेड अवेलेबल टू अस आर 95%. 95% याद है, अभी हमने ऊपर के सेशन में किया था. दोज आर न्यू फर्स्ट टाइम ऑब्जर्विंग द वीडियो. 95% मतलब बाजू के 5% आपके रिजेक्शन में जाएंगे. मतलब वहां पे क्रिटिकल लेवल जेड का जो मिलेगा वो दोस्तों 1.96 प्लस माइनस मिलता है. सो वी कैन से द वैल्यूज अवेलेबल आर 1.96. yes, so values are 1.96. Are you getting that answer? Z alpha कितना मिला हमें? 1.96 मिला. चलिए, now we are interested to find out the difference between the means. उन्होंने हमें difference of means पे calculate करने को बोला है. First mean was what we have substituted. It was 87. Second mean it was 84. So just get a difference of it. 87 minus 84. It is nothing but 3. So I got the first difference. It is x bar. It is nothing but 3. Now we are interested to find out remaining part. How to find out that remaining part? Chaliye, we observe it step by step. So the formula is to find the confidence limits. It is nothing but x bar plus minus z critical into the value that we are getting from the upper part, that is nothing but s. X bar difference ढूंढा हमने 3 plus minus z alpha, it was 1.96. S it was 0.77. It is already the uppermost value, the denominator that we have calculated. You can see the value of 0.77 is taken from this value. So observing it, it is nothing but a value of S. Sure, जो हमने formula में देखा था. So taking all those things in the consideration, we can say hence the difference between them is 4.51 and 1.51. So difference between them is given by this answer. Sure. So we just do an recap what we have done in an numerical. So सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा.
क्वेश्चन देखने के बाद हमें समझ में आया कि सैंपल 1 सैंपल 2 दिए हैं, मतलब दो सैंपल्स अवेलेबल है, सो चेंज ऑफ केस हुआ। अगेन सैंपल का साइज देखा, इट वॉज 300, इट इज 250, इट इज अ लार्ज सैंपल ग्रेटर देन n1 n2, सो उन्होंने मांगा है डिफरेंस ऑफ मीन्स पे ढूंढना है, मतलब हम लोग फॉर्मूला याद करेंगे, z इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 बार माइनस x2 बार अपॉन रूट ऑफ sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by n2. Already formulas are with us. By observation of numerical, we can easily find out mean 87 x1 bar, 84 x2 bar, standard deviation 10. It is sigma 1 8, it is sigma 2 n1 300, n2 250. Substitute the value, denominator is called as standard error, it is s, it is 0.77. We have found out z, that is test statistic, it was 3.91. We are using confidence limit of 95 percentage, so critical z alpha is 1.96. We are asked to find out at difference of means, it is x bar, it is x1 bar minus x2 bar, it is 87 minus 84, x bar is 3. Now to find out the confidence limit, the question is x bar plus minus z alpha into s. Just substitute the values and I think the answer is clear to us. Please reply whether any doubt, difficulty, you are getting the 100%, because number of times the chances are that this type of numerical will be there in the paper, which will definitely assure you to have minimum 5 to 6 marks by observation of this 10 marks, 10 to 15 minutes video. It will be really helpful to you. If you are not subscribed, please subscribe the channel. Please like the video if it is found useful to you, so that we can move to the next numerical. Please forward it to your college groups, your friends, so that they can be beneficial under the circumstances of lockdown, and whenever they will conduct the examination, our students will not wait for anywhere for any paid crash courses something. Chaliye, it's not our topic. So I think we have got the concept. We should move to the part. I have kept it as a practice numerical. एंड आई थिंक द सेम थिंग जो ऊपर हमने देखा था अभी यहाँ पे रेडीमेड दिया है, इट इज नॉट अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ एन टैबुलर फॉर्मेट, इट इज जस्ट शोन अस इन एन वर्डिंग, एंड योर वर्डिंग में दिया है। प्लीज देखिए क्या दिया है। होप सो ऑब्जर्वेशन भी आज हमें समझ में आएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग यूर रिप्लाई इन द चार्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग यूर रिप्लाई in the chat. Please reply me if you are happy, if you are getting the concept. Please like it, please subscribe it, please chat में मुझे दीजिए, reply कीजिए yes or no, so that we can move ahead. The means of two samples, sizes 1000 and 2000. बोलिए फटाफट क्या डाटा अवेलेबल है भाई साहब, ये क्या है, ये 1000, क्या कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा ये 1000 क्या है? What is 1000? Yes, definitely it is n1. What is this 2000? Sir, definitely it is n2. So you can say now it is n1. We can say it is n2. So two samples, two means. Respectively are having 37.5, 68 inches. First is x1 bar, second is x2 bar. Inches में दिया है, no problem. Can the samples be regarded as drawn from a same population of a standard deviation of 2.5 inches? याद कीजिए ऊपर का वो फॉर्मूला जो हमने बात किया था, ऊपर का वो फॉर्मूला जो हमने बात किया था। सिद्धेश इज गेटिंग सम डाउट। सिद्धेश, आई विल हेल्प यू आउट। जो ऊपर के आंसर था, एक टाइम प्लस साइन यूज कीजिए, एक टाइम माइनस साइन यूज कीजिए, यू विल हैव योर आंसर। प्लीज, अगर आप प्लस साइन यूज करते हैं, आई एम विथ यू, वी आर गोइंग टू गेट 4.51। अगर माइनस साइन मिलेगा, we go to the second part. Siddesh, I think you are getting that answer. Coming back to the second numerical, this is your practice part. Hope सब तक आपने लिख के निकाला होगा। Just data लिखिए, just data लिखिए, बाकी का part sufficient है। N1 is 1000, N2 is 2000, X1 bar is 37.5, X2 bar is 68 inches, and this is the second type जो मैंने अभी के इसमें दिया है। We are observing SD, it is 2.5 inches. Only one sigma is available with us. No problem. We use the same data and we continue with the part. जो भी हमने ऊपर शुरू में वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूलास पढ़ाए थे, उन्हें यूज कीजिए, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम योर साइड. प्लीज do it as fast as possible and let me know the answer at the end of session, at the end of video. We will be getting those answers and from your side. I am waiting for your part. चलिए, we move to the next line. We move to the next slide. It is our numerical number 10.
This is a 10th numerical what we are covering in the session. We are almost taking another numerical. Just observe कीजिए, just देखिए अब ये न्यूमेरिकल में क्या वैरायटी आया है. Are you getting it? Yes sir. अभी ऑब्जर्वेशन से हमें समझ में आना स्टार्ट हुआ है कि what we are doing in that part. Sure? चलिए देखते हैं क्या मिला हमें. So हमें मिला है numerical number 10 in such a fashion that they were told us the average marks scored by 32 boys and 72 boys. नहीं भाई साहब, बी केयरफुल, यही वो मिस्टेक है मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं. यू कैन सी द न्यूमेरिकल्स, द वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स व्हाट वी आर टेकिंग इन द सेशन. पहले न्यूमेरिकल्स में n1 n2 चिपक के आया था. सेकंड जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया उसमें भी n1 n2 चिपक के आया था. सी केयरफुली फॉर दिस न्यूमेरिकल व्हाट वी आर हैविंग विथ अस. सर the average marks scored by 32 boys is 72. भाई साहब ये n1 n2 नहीं दिया है, ये boys का एवरेज दिया है, n1 का मीन दिया है. पहला डाटा n1 है तो उसका मीन मिलेगा x1. Please be careful. I already marked in that part. Are you getting this? It is nothing but n1. तो दिस इज नथिंग बट x1 बार. एक n1 मिला, एक उसका मीन मिला, दूसरा n2 मिला, एक उसका x2 मिला. So simultaneously sigma भी दिया है, तो वैसा we can call it as sigma 1. So we can say it is sigma 1 is 8. Similarly 36 girls, we are not considering, we are not interested in any gender, we are not interested in any language, we are not interested in story. Just हमें चाहिए दो डाटा, एक n1 32, एक n2 36, एक x1 bar 72. Anybody? Second x2 bar, it is 70. So first sigma 1 it is 8, second sigma it is 6. Are we getting it? Reply me fast, yes or no. Patapat, tell me fast, are you getting that answer? Tell me fast, are you getting that answer? Yes, बढ़िया है. चलिए आगे चलते हैं. The same data is made available to us. Pakka, we have got n1 32, we have got n2 36, we have got sigma 1 8, we have got x1 bar 72, we have got x2 bar 70, we have got sigma 2 6, and now we are getting those answers. Similarly, it is x bar. What is x bar? It is x1 bar minus x2 bar. So it's common sense. 72 minus 70, the answer is 2. अभी याद कीजिए अभी हमें क्या चाहिए. The change in formula. What is change in formula? कुछ नहीं है. Sigma 1, sigma 2 separately available है. Directly use that formula. Can anybody recall it? Can anybody tell me what was that formula? The formula is, बोलिए, I'm waiting from your side. It is z is equal to mod of x1 bar minus x2 bar upon root of sigma 1 square upon n1 plus sigma 2 square upon n2. Yes sir, the same thing is visible to us. फॉर्मूलाज याद होने चाहिए दोस्तों. फॉर्मूलाज के साथ करो, न्यूमेरिकल के पीछे मत भागो. फॉर्मूलाज करो, न्यूमेरिकल्स आपकी तरफ आएंगे, मार्क्स आपको मिलेंगे. चलिए, आर यू गेटिंग द फॉर्मूला? सबस्टिट्यूट द वैल्यूज व्हाट यू आर वेटिंग फॉर. आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड फॉर s. It is nothing but AC. It is standard error. It is S statistic. Be quick. Tell me the answer. I am waiting for your side. Patapat, patapat. I am interested to find out this answer. ये रूट के अंदर का आंसर ढूंढना है हमें, तो सीधा रूट के साथ ब्रैकेट डाल के स्टार्ट कीजिए. By using good calculators, it will give us the answer. बोला मिलते सगळ्यांना फटाफट. Do it fast. Yes, everybody is happy. Are you getting that answer? It is nothing but the answer of, ये किसका आंसर है? ये आंसर है अपने S का. ये आंसर है अपने S का. Are you getting that answer of S? पक्का समझते सगळ्यांना. We are getting that answer as S, and we are getting the answer of S as 3. It is root of 3. We will be getting that answer of root of 3, and we are moving ahead. चलिए भाई साहब. Anybody has calculated the value of Z? Z calculated. It is 1.14. Now be careful. Again एक छोटी सी वैरायटी अवेलेबल है. Can I take your pardon? चलिए ऊपर आइए. एक छोटी सी बात जो बच्चे ध्यान नहीं देते, जो हमें ध्यान देना है. First time they are introduced something. Test at 1% level of significance. अब तक हमें आदत हो गई थी 95% लेवल पे या 5% डिफरेंस पे काम करने की. अभी 1% पे हम लोग काम करेंगे एंड 1% पे काम करेंगे. तो भाई साहब
यहाँ पे z का वैल्यू अलग है। होप सो हम सबको याद आता होगा। एनीबडी कैन रिकलेक्ट? ये जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है, तो अगर आपके पास बेसिक नहीं है तो पीछे के वीडियो में जाइए, वहां पे देखिए फर्स्ट नंबर दिया है उसे हमने, एंड वहां पे आपको सारे फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे। 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जेड अल्फा का वैल्यू होता है, इट इज 2.58, इट इज 2.58, is a very important one. It is 2.58. अभी कितना है z? It is 1.154. So you can say z calculated is less. अभी उसके पीछे मत भागो. Just we need to find out confidence limit, and I think you know how to find out confidence limit at difference of means. At difference of means, the formula is, anybody can let me know the formula? Anybody? I'm expecting formula from your side. The formula is nothing but confidence limits. Yes, already पहले सब पार्ट में मैंने फॉर्मूलाज भी एक्सप्लेन करके दिए, पहले वीडियो में भी हमने फॉर्मूलाज एक्सप्रेस किए हैं, प्लीज देखिए उसे. Anybody? I'm expecting from your side. It is x bar plus minus z alpha into sigma. So yes sir, we're having those formulas with us. We have seen that z calculated is less than z alpha. It is accepted. Confidence limits are given by x bar plus minus z alpha critical value into sigma. Yeah, we can say it is s. जो भी हम लोग बात करेंगे, we can use that formula. We can have our answer. It is 2 plus minus z alpha, that is for 1% confidence limit into sigma, it is root 3, and we can say yes. Now we are having our answer with us, and we are moving to the next point. Are you satisfied? Are you happy? बोलिए भाई साहब, समझ में आ रहा है आप सबको? Tell me yes or no. पक्का? फटाफट. I'm expecting your comment from the part so that we can move to the next part of sampling, and that next part of sampling is small sampling. So अब तक जो हमने लार्ज सैम्पलिंग या प्रीवियस वीडियो मैंने स्पेसिफिक लार्ज सैम्पलिंग एंड चाय स्क्वायर टेस्ट के लिए बनाया था, हमने हमने ऑनलाइन सेशन में पढ़ा था. अगर वो समझ में आया है तो अच्छे तरीके से देखिए, उसमें मैंने पूरे कंसेप्ट भी दिए हैं. अगेन एंड अगेन वो वीडियोस रिप्ले करके देखिए. मैंने क्लास के यूट्यूब चैनल पे उसे अवेलेबल करके रखा है. इट इज मेड पब्लिक, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स. याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मतलब आपको नेक्स्ट आने वाला कोई पार्ट आपका मिस नहीं होगा. आपको वो बेल बटन क्लिक करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगा, एंड लाइक करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा इफ आई गेटिंग द कंसेप्ट. चलिए, आई एम एक्सपेक्टिंग योर साइड आगे जाने का कि नहीं. इट इज ऑलमोस्ट 8 o'clock. तो किसी को खाना खाने को नाही लगा है ना भाई साहब? भूक वगैरे नाही लागली ना? जाऊया का पुढे? थोडंसं अजून अर्धा एक तास मस्त छानपैकी लेक्चर घेऊ. तुम्ही म्हणा तो तिथपर्यंत आपण लेक्चर घेऊ. आय एम एक्सपेक्टिंग युअर साइड. पुढे जायचंय का? शुड वी मूव अहेड? शुड वी प्रोसीड? टेल मी yes or no. समजतं सगळ्यांना? वी आर इंटरेस्टेड टू मूव इनटू द concept of small sampling. I'm expecting your reply. Yes or no? मस्त. लिंक लागले शुभक म्हणतोय. व्हेरी गुड. एवरीबडी इज इंटरेस्टेड. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द कांसेप्ट ऑफ स्मॉल सैम्पलिंग. चलिए स्मॉल सैम्पलिंग में आते हैं. थोड़ा सा एक छोटा सा रिकैप करते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. आज वापस देखने की बात करेंगे. स्मॉल सैम्पलिंग क्या होगा? व्हाट इज स्मॉल सैम्पलिंग? सर, अगर सैंपल साइज आपका इनका वैल्यू 30 से ज्यादा है, we are going to call it as a large sample, and when that sample size n is less than 30, we are going to call it as small sample. So we are happy, we can say small sampling में जाना है तो इसके आगे हमें दिमाग में रखना है कि every time the sample size देखने के बाद हमें याद आना चाहिए कि sample size must be less than 30. यहाँ पे स्मॉल सैम्पलिंग के लिए जो हम लोग टेस्ट यूज करते हैं उससे हम लोग नाम देते हैं टी टेस्ट, एंड उसके 2 फॉर्मूलाज मैंने अवेलेबल करके दिए हैं. नोट डाउन योर फॉर्मूलाज. क्विक, बी क्विक. Note down the formulas because we require those formulas later on in our numerical. Be quick, be quick. सर टी टेस्ट, यहाँ पे टी यूज करेंगे हम लोग. अलग से इसका टेबल भी अवेलेबल है, बाद में मैं इसे नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा. अलग से पीडीएफ में उसे अवेलेबल करके दिया जाएगा जो क्लास के अपने सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस के वेबसाइट पे अवेलेबल होगा.
आप फ्रीली वहां से डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। लेकिन जस्ट गिव मी सम टाइम, बिकॉज मुझे अकेले को ये सब पार्ट नाउडेज मैनेज करना है ये लॉकडाउन में, तो आप समझ सकते हैं इट टेक सम टाइम। लेकिन कल मॉर्निंग तक ये सारी बातें पीडीएफ में क्लास के साइट पे अवेलेबल होंगी। आप वहां से नेक्स्ट वीडियो से पहले उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, आपके साथ रख सकते हैं कॉपी करके, एंड इट इज फ्रीली अवेलेबल टू यू, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज नथिंग बट अ टी टेस्ट, जहाँ पे हम लोग देखना चाहेंगे, एंड ऑब्वियसली वी आर इंटरेस्टेड टू नो द पैरामीटर्स। सब पहले हम लोग जेड पैरामीटर ढूंढ रहे थे, यहाँ पे हम लोग टी पैरामीटर ढूंढेंगे। व्हाट आर द टी पैरामीटर, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल विद अस। टी के पैरामीटर के लिए अपने पास एक पार्ट अवेलेबल है, उसका नाम है एक्स बार। व्हाट इज एक्स बार? इट इज नथिंग बट मीन म्यू, इट इज अ पॉपुलेशन मीन। एस इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड एरर या एस जिसे हम लोग लिखते हैं, एंड रूट एन इज नथिंग बट the sample size. Again, S can be given by another formula. You can see the formula is made available to us. It is root of summation x minus x bar. Number of times this x minus x bar. दोस्तों ये जो x minus x bar यहाँ पे दिखा रहे, ये x minus x bar हम लोग एक सिंबल से दिखा सकते हैं, एंड वो सिंबल होता है DI. So number of times, number of teachers, number of reference books will show us different symbols. So be careful for that part. It is a DI. So it is nothing but summation DI square upon n minus 1. Be careful for this n minus 1. What do you think? What is this n minus 1? So it is nothing but important note. It is called as a degrees of freedom. And इसे देखिए हम लोग वो चार्ट पे यूज करेंगे। तो ये चार्ट मैंने अभी ये सेशन में नहीं रखा है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट उसे यूज करके आगे जाना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों ये बाद में मैं जब चार्ट आपको स्पेसिफिकली अलग से पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आप रेडी रहिए, एंड हम लोग वो चार्ट देखते आगे जाएंगे। तो अभी अपना न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने रखा है। इट्स अवर हैबिट टू रन द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या चाहिए देखते हैं, याद कीजिए। The first line it tells me a random sample of size 16. A random sample of size 16. Yes, so the first data what we can record is nothing but n is equal to 16. समजतं सगळ्या मित्रांना? टेल मी यस और नो, रिप्लाई मी इन द कमेंट। कम से कम आप लाइव चैट में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और गेटिंग दैट पार्ट यस और नो तो लिख सकते हैं। एन का जो डाटा आपको समझ में आता है, जो सिंबल आप बता सकते हैं, उस सिंबल आप लिख सकते हैं, सो दैट ये लाइव सेशन में मुझे समझ में आता है कि यस सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट, आई एम गोइंग टू आंसर दैट थिंग, हो क्यों नहीं। यस, आदित्य जी इज रिप्लाइंग मी, वेरी गुड आदित्य जी, अच्छा है। बाकी के दोस्तों से भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दे आर गोइंग टू गिव अस समथिंग इन द चार्ट। चलिए कमिंग टू द सब्जेक्ट, सर रैंडम सैंपल ऑफ साइज n 16, अ नॉर्मल पॉपुलेशन, याद आ रहा है नॉर्मल पॉपुलेशन है भाई साहब, showed a mean, so be careful, a normal population shows a mean of 103.75. आई थिंक आपको समझ में आ रहा है मुझे क्या बात करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे आते हैं। आगे का वर्ड तो देखिए क्या ब्यूटीफुल है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन, समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम द मीन। डिविएशन फ्रॉम द मीन याद आया? एनीबडी 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 आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड। सर अभी जो ऊपर हमने देखा था ना, मैं वापस लेके आया ऊपर, हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, दिस इज दिस समेशन। सम डिविएशन है x माइनस एक्स बार, सम मतलब समेशन हो गया, स्क्वायर किया हमने किसका, डिविएशन है, किसका डिविएशन, जो सर ने डी बताया था। लेकिन वो डी किससे दिया है हमने, अलग अलग टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं, कभी मीन होता है, कभी मीडियन होता है, कभी स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। आप यहाँ पे बता सकते हैं सर इट इज एक्स बार बोला है, सो इट इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार द ब्रैकेट स्क्वायर। ये वैल्यू आज दोस्तों अपने पास अवेलेबल है, दोस्तों ये वैल्यू आज अपने पास अवेलेबल है। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? इट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर। गुड, अब तक हमने गिवन डाटा नहीं, अब तक हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, एंड हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो न्यूमेरिकल से हमें क्या डाटा मिलेगा। फ्रॉम मीन इज 843.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस सर वो समेशन का आंसर हमें मिला है।
Can we say, see the wording, you can see the beauty of the numerical, क्या language use करते हैं. Can we say, you know what is important wording. आप सोचते होंगे ऊपर सर ने ना एक डाटा स्किप किया. He has not discussed that part. He has not discussed about this 103.75 centimeter because मुझे एक साथ ये डिस्कस करना है. 108.75 सेंटीमीटर. कैन एनीबडी टेल मी. सो दोनों मीन है, दोनों मीन है. एंड अभी कंफ्यूजन का पॉइंट है. यहाँ पे बचे दोस्तों, आपको सब आ जाएगा. यहाँ पे बचिए, यहाँ पे बचे तो सब आ गया. एनीबडी लेट मी नो क्या पार्ट है ये. सर ऊपर का मीन है 103.75, उसे क्या सिंबल में हम लोग यूज करेंगे. Yes, I'm expecting from your side. Side is nothing but mu x bar. Kasandeep Joshi. Tell me, I'm sorry, just kidding. Tell me, what is that symbol? What that symbol means me. 103.75 में किसका आंसर सब्स्टिट्यूट करना चाहूंगा. 103.75 is the answer of x bar. एंड नीचे ये जो पॉपुलेशन मीन दिया है दोस्तों, उससे हम लोग अज्यूम करेंगे म्यू, जिसे हम लोग नल हाइपोथेसिस में एच नॉट म्यू नॉट करके अज्यूम करने वाले हैं कि पॉपुलेशन का मीन 108.75 है. एंड उसके साथ हमें चेक करना है कि व्हाट वी आर टॉकिंग सही और गलत या कैसे है. श्योर आगे जाएंगे हम लोग. गेटिंग मी. सो सबसे पहले मैंने आपको गिवन डाटा मैंने आपके सामने रखने की बात की है. जो मैंने हमेशा कहा है, हर वर्ड कुछ कहता है. n का वैल्यू 16 मिला, x बार 103.75 मिला, समेशन xi माइनस x बार द ब्रैकेट स्क्वायर 843.75 मिला, म्यू नॉट इट इज 108.75 मिला. एंड यस, नाउ वी कैन स्टार्ट विद एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल. चलिए, वही कहां से आया म्यू नॉट, ये अपना अजम्पशन है. लेट नल हाइपोथेसिस, let null hypothesis H naught is mu is equal to 108.75. Then we are going for alternative hypothesis. Anybody, what is that common sense of alternative hypothesis? Sure? Pakka? What is H naught? What is mu? It is 108.75. ये अपना assumption है दोस्तों. Then it is alternative hypothesis. It is HA. Mu is equal to 1. HA mu is not equal to 108.75. So null hypothesis accept होगा जब अपना टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होगा. एंड जब तक वो मैच नहीं होने वाला है तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे. समझ में आ रही बातें? टेल मी यस और नो. समझता है? चला, सबसे पहले अपना स्मॉल सैंपल में एक ही काम है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी. सब बट ये टी का वैल्यू ढूंढने के लिए अगर फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला याद है, मैंने आपको बोला था, अभी नोट करके रखिए. इट वाज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. व्हाट वाज दैट फॉर्मूला ऑफ टी? इट वाज एन मॉड ऑफ, यस, इट वाज मॉड ऑफ टी माइनस सॉरी एक्स बार माइनस म्यू. इट इज नथिंग बट एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट ऑफ एन माइनस 1. याद आ रहा है? आई एम मेकिंग इट ऑन योर स्क्रीन. चलिए सर, द फॉर्मूला इज नाउ अवेलेबल विथ अस. एक्स बार माइनस म्यू, एक्स बार पता है x bar is nothing but 103 point something, mu हमने assume किया है 108.75. The first problem lies with s. We are not having the answer of s, but we are having the formula with us for s. What is formula of s? Anybody? It is root of. याद आ रहा है सब बच्चों को? What is formula of s? It is root of x minus x bar the bracket square divided by root of n minus 1. Substitute the values. It is 843.75 by 15. Take out your calculator. Be quick. Do it fast. I'm waiting for your side. Yes, Mirta Sagana. It is 843.75. What is that answer? Root 75 divided by 15. Answer is 7.5. So we can say the value of s is 7.5. What is value of n? It is 16. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए root of n minus 1. यहाँ पे चाहिए. याद आया क्या सबको? सो ये s का वैल्यू अभी हमें मिला है. व्हाट इज वैल्यू ऑफ s? इट इज 7.5 whole divided by n minus 1. Anybody, what is that n minus 1? It is 15.
श्योर, जाएंगे आगे, चेक कीजिए, first substituted the values in front of us, answer is in front of us, पक्का, are you getting that answer? Good. So do the substitution, I'm waiting from your side, do the substitution. Yes, the answer is 2.58. That's a beautiful answer. Check कीजिए whether everybody is getting that 2.58 or not. I'm waiting for your part. Good. अब ये t क्या है? We are getting t answer of 2.58. Just give me 1 minute. इससे हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में किया था, यहाँ पे भी हम लोग परफेक्ट करेंगे. So what is this t? This is called as t calculated 2.58. अभी हमें चाहिए स्टैंडर्ड टी, दैट इज क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी. कहाँ पे मिलेगा? सर उसके लिए मैंने बोला हमें टी टेबल यूज करने को आना चाहिए. अभी हम लोग उसे रेडीमेड यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको सिर्फ टी टेबल यूज करने का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा. एक सिंपल आइडिया है, डरिए मत. अगर वो मेंशन करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो अच्छी बात है, अगर मेंशन नहीं करते मैं आपको एक सिंपल आइडिया बताता हूँ. वी आर गोइंग टू यूज इट एज 0.05. मतलब टी टेबल में वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व सम रोज एंड कॉलम्स, उसमें से हम लोग 0.05 का एक कॉलम यूज करेंगे, उसमें 0.01 नंबर ऑफ कॉलम्स अवेलेबल होंगे. देन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने देखा था व्हाट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एंड दैट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाज इट इज n-1. अपना n कितना है? 16 है. ऑलरेडी हमने फॉर्मूला में भी यूज किया है. व्हाट इज दैट n-1? इट इज 15. तो हम लोग वहां पे 15th नंबर के रो में 0.05 के कॉलम में, मतलब रो कॉलम मैच करके हम लोग वहां से एक z का कैलकुलेटेड वैल्यू ढूंढेंगे. एंड दोस्तों आपके जो वैल्यू मैंने लाया है यहाँ पे ढूंढ के, सो विल बी जस्ट फोकसिंग ऑन दैट वैल्यू रेडीमेड. अभी तो डिरेक्ट हम लोग देखेंगे उसे. ऑब्जर्विंग दैट पार्ट, यस, द वैल्यू ऑफ level of significance is 2.131. We have taken it from level of significance, that is 0.05. Degrees of freedom what we have used is degrees of freedom, that is n-1, it is 15. And we can move ahead with calculated value or tabulated value is 2.131. Now याद कीजिए what was our found out answer? It was 2.58. It is calculated answer. And what is tabulated answer? critical answer 2.131. म्हणजे calculated answer given answer से ज्यादा है. नहीं दोस्तों, रेफरेंस से कुछ ज्यादा नहीं चलेगा. जो भी आप का टी कैलकुलेशन का आंसर होगा, वो कैलकुलेटेड आंसर जो होगा वो आपके टेबुलेटेड टेबल के आंसर से कम ही आना चाहिए. तो हम लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, एंड अगर नहीं आने वाला है तो हम लोग उसे रिजेक्ट करेंगे. एंड व्हाट वी कैन से, अ डिस्टर्बेंस, व्हाट वी कैन से, yes, we are getting that answer. Good. Decision H naught is rejected, and we cannot say that population mean जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया था, we can't assume it as 108.75. it must be something different, it must be something different. Sure, पक्का. जाने का आगे दोस्तों, बिकॉज आगे की न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट है. आगे की न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर एक टाइम हमने स्टार्ट किए तो भाई साहब मुझे 2-3 न्यूमेरिकल तो लेने पड़ेंगे. इट्स 8:10. सो वी स्टार्टेड ऑलमोस्ट बाय 7:15. अगेन 7:20 तक किया था हमने स्टार्ट, बिकॉज आई वाज बिजी इन सम प्रीवियस सेशन. तो बोलिए यहाँ तक आपको समझ में आया है क्या? दोस्त ऑब्जर्विंग फॉर फर्स्ट टाइम प्लीज लाइक द वीडियो. मैंने अब तक देखी नहीं, मुझे वहां पे लाइक नहीं दिख रहे. कम से कम दोस्तों लाइक बटन तो दबाइए, सर का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए. आदमी घर पे बैठे बैठे आपको पढ़ा रहा है. जस्ट गिव मी दैट लाइक बटन. प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सब क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए. ऑब्वियसली नथिंग इज अवेलेबल राइट नाउ ऑन द स्क्रीन, लेकिन जब भी आप चैनल पे जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे, प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए. एंड अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आपके कॉलेज के दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. जाने का ना आगे दोस्तों? शुड वी प्रोसीड? शुड वी?
यूट्यूब इज नॉट रिसीविंग इनफ वीडियो, प्रॉब्लम होता है, सब चल रहा है दोस्तों। चलिए वी ट्राई टू कंटिन्यू, अगर वहां पे कुछ डिस्टर्बेंस आए तो बात करेंगे। This is one of the important type of numerical what is available in front of us, the most important one. पूरा concentration के साथ बैठिए, it is really important numerical. Sure, I am working on that part. अगर कुछ quality में problem है तो, but hope so. यहाँ पे हमें दिख रहा है 10 individuals are chosen. 10 individuals are chosen at random from a population and their heights are found to be, and डाटा हमें दिया है। सर सबसे पहले एक पॉइंट समझ में आया आपको? 10 इंडिविजुअल्स बोला उन्होंने। जब वो कहते हैं 10 इंडिविजुअल्स, दिमाग में आता है इनका वैल्यू 10 है, इनका वैल्यू 10 है, लेस देन 30 है, लेस देन 30 है तो स्मॉल सैंपल है। वी कैन से 10 इंडिविजुअल्स 30 से कम है तो स्मॉल सैंपल का न्यूमेरिकल आर चोजन एट अ रैंडम फ्रॉम ए पॉपुलेशन एंड देयर हाइट्स आर फाउंड टू बी, एंड वैल्यूज दिए, चेक करेंगे 10 वैल्यूज अवेलेबल है कि नहीं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Yes sir, 10 values are with us. So should we move into the part? Question क्या है? Discuss the suggestion, discuss the suggestion that mean height of universe is 6.5 inches. क्या बात कर रहे हैं सर? 10 लोगों का डाटा देख के आप यूनिवर्स के मीन हाइट की बात करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले n10 है, समझ में आया, डाटा छोटा है, स्मॉल सैंपल की बात होगी। शुड वी मूव अहेड? चलिए तो हमें अभी करना क्या है, टेबल बनाना है दोस्तों। करना क्या है, टेबल बनाना है। टेबल बना दिया हमने, ऊपर के वैल्यूज नीचे लिख के निकाले। 63 63 64 65 66 69 69 70 70 71। इज दैट अवेलेबल विथ अस? यस सर। अलग अलग मेथड होते हैं आगे जाने के लिए। पहला मेथड है, सर हमें क्या चाहिए, ऊपर हमने देखा था हमें डी आई चाहिए। डी आई ढूंढने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? इट इज एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई के तो वैल्यूज सामने दिख रहे हैं हमें, 63 63, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स आई। एक्स बार कहां से आएगा? नाउ द क्वेश्चन इज ब्यूटीफुल, एक्स बार कहां से आएगा? एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों ना आपको दो चीजें चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, एक जो सामने डाटा दिख रहा है उसका एक्चुअली आपको एक्स बार ढूंढना पड़ेगा, सही है, गुड। और उसमें से कोई भी एक जनरली जो सेंट्रल वैल्यू होता है उसे हम लोग अज्यूम्ड मीन बोलेंगे। चॉइस इज विथ अस, सो आई एम giving it on your side. You can take any one idea. I am just explaining both the ideas to you. अभी मैंने क्या किया है आपके सामने, मैंने जो एक सेंट्रल वैल्यू जस्ट अजम्पशन, एक बीच का वैल्यू को मैंने अज्यूम्ड मीन करके दिया है। टाइम बचा ना दोस्तों? तो कोई क्वेश्चन मन में आएगा कि कोई मेथड से करेंगे तो कैसे चलेगा? इट्स माय एश्योरेंस, आप कोई भी एक मेथड से करो, वी आर गोइंग टू गेट सेम आंसर। श्योर? चलिए, सो हमने पहला वैल्यू अज्यूम किया, 66 इज आवर एक्स बार वैल्यू। सो 66 माइनस 66 इज 0, एक एक माइनस करते गए। 65 माइनस 66 माइनस 1, 64 माइनस 66 माइनस 2, 63 माइनस 66 माइनस 3, द सेम आंसर। 69 minus 66, it is 3. 69 minus 66, it is again 3. 70 minus 66, it is again 4. Same answer 4. 71 है तो 5. Getting the step? पक्का? जाने का आगे? आगे क्या करना है हमें दोस्तों? स्क्वायर चाहिए. Just a common sense. No need of using calculator. We can do it orally also. Just do the square. Minus 3 का square 9, 9. Minus 2, leave that negative sign. We are not bothered about negative signs. It is a minus 3, 9, minus 2, 4, minus 1, 1, 0, 0, 3, 9, 3, 9, 4, 16, 4, 16, 5, 25. Is that clear? पक्का? करते सगळ्या मित्रांना? झेपतंय? जाऊ शकतो पुढे आपण? Should we? पक्का. Thank you. So, आगे क्या है? Common sense. Now the formula is with us. उसे यूज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। सर सबसे पहले हमने क्या किया? समेशन डी आई ढूंढा। समेशन डी आई के बाद कॉमन सेंस, समेशन डी आई का स्क्वायर चाहिए। भाई साहब ऊपर के सब डी आई को ऐड किया क्या आपने? यूज द कैलकुलेटर।
It is summation di 10. Common sense, summation di square. समेशन डी आई स्क्वायर है. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे मैंने बाजू में लिखा है. बहुत बच्चों को एक गंदी आदत होती है, मतलब क्या कहते हैं, कैजुअल अप्रोच. वी शुड नॉट यूज बैड वर्ड्स. व्हाट इज दैट पार्ट? दे विल गो फॉर समेशन डी आई इज 10, समेशन डी आई स्क्वायर 100 लिखते हैं. इसका स्क्वायर नहीं करना है, इसका स्क्वायर नहीं करना है. ये आंसर यहाँ पे आएगा एंड ये आंसर यहाँ पे आएगा. गेटिंग मी? ये एडिशन सब्ट्रैक्शन आने वाले हैं. हेलो सर, व्हाट? हेलो 2 मिनट. चलो दोस्तों, बी क्विक. फ्यू सेकंड्स या फ्यू मिनट्स आर अवेलेबल विथ अस. मेरा सकाना समेशन दिया है, सबको मेरा समेशन दिया है स्क्वायर. डाटा समझ में आया, अज्यूम्ड बिन दिया, डी आई ढूंढा, डी आई स्क्वायर किया. आगे आएंगे फॉर्मूलाज में फटाफट. नाउ वी आर रेडी विद फॉर्मूलाज. Summation xi minus x bar square, it can be calculated by using different formula. Summation di square minus summation di the upon n the whole square. Come on, be quick. Summation di square upon n. Be quick. I'm expecting from your side. Substitute the values. It is 98 square minus 10 square by 10. Do the calculation. Do it fast. Do it fast. I'm expecting answer from your side. And what is summation x minus x the bar whole square? पटकन आन्सर पाहिजे मित्रांनो मला. We need answer. We need answer. Anybody answer? I'm expecting in the chat. Anybody? What is the answer? अरे बैठे बैठे सो गए क्या? Come on, tell me the answer. क्या change करूँ screen में? Already we are getting oh, now we are getting excellent connection. Be quick. What is the answer? Reply. What is the answer we are getting with us? Anyone? Just type कीजिए. Siddesh is with first answer. It is 9594. नहीं मित्रा. Aditya ji 9594. What do I calculating, man? This is a small mistake in that part. Okay, let me rectify it. Just give me a second. Rutik, Aditya, Siddesh, you are doing the same thing what you are doing in class. Don't copy the screen. Use your common sense. Don't copy the screen. Be careful. Don't copy the screen. I can give the answer. It is 88. It is answer is 88. Be careful. मैंने अभी भी आपको बताया था ये बच्चे मिस्टेक करते हैं. We are not expecting this mistake from all of us. Summation di square का square नहीं करना है. It is 98 only. We are going to replace the value of summation di square. It is 98 only. मैं हमेशा कहता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी डेंजरस साइन. di square 100 square 10 square is 100 divided by n. 100 divided by 10 is 10 and 98 minus 10 is 88. दोस्तों मुझे कैसे की जरूरत नहीं है, but I'm expecting the same thing from your side also. Come on, man. Are you getting that answer? How it is 88? It is clear. Is it clear? Reply me. यही वो जगह है जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं. हमें बचना है वहां से. Hope so. Coming to the subject. X bar is 67. Actual calculation.
सो दीज आर सम कॉमन मिस्टेक्स जहां से हम लोग बचेंगे. 66, 67 जो भी हम लोग अज्यूम करते हैं, replace that values. Come on, be quick, replace that values. I'm interested to know the answer of S. I'm waiting for your side. Answer of S. Answer of S. Yes, anybody? Yes, I'm getting reply. Very good. Who is that boy? He's telling me. Okay, he's. Huh? Correct, eh? It is 3 point. 1 to the perfect one. So we can move ahead. We can uncheck the part. So go to the formula, substitute the value, getting S is 3.13, getting the answer of T as 1.92. Yes, very good. Divya ji, acha hai. Rutik ji, very good. Number of students are getting the correct answer. So you can say we are having the answer of T, it is 1.92. Level of significance 0.05. Degrees of freedom, it is n minus 1. It is obvious super. हमने देखा था ना भाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे ढूंढते हैं, यूज करके आगे आएंगे. T is 2.262, but common sense. T calculated is 1.92, is less than critical value. Null hypothesis is accepted. Is that clear दोस्तों? Is that clear? पक्का? Should we continue? One more numerical. चाहे तो we can give it for practice. Same type, and we can conclude the session. Just discuss करते हैं. दो numericals मैं आपके सामने रखना चाहूँगा. Are you ready? Just it is 8:20. We need to complete the part. चलिए क्या दिया है सर? Again and numerical is made is shown in front of us. मैं again आपसे कहूँगा हमें भाई साहब उसके लैंग्वेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड वो क्या है, कैसे है, कहाँ से आता है, कि मैन है, वुमन है, क्रशिंग स्ट्रेंथ है, हाइट है, वेट है. नथिंग डूइंग. when they have given us 10 values, n is 10. गिवन डाटा को हम लोग क्या लिखेंगे? xi. कोई भी एक डाटा को हम लोग assumed mean लेंगे. We follow the same procedure. Test the breaking strength of matter assuming it as 577. They have given us 577. It is the value of mu. Come to the first part. समझ में आया? 10 डाटा प्लीज देखिए यहाँ पे. डाटाज आर अवेलेबल. Assumed one part. Get the value of di. Get the value of di square. Write summation di. Write summation di square. यहाँ पे मिस्टेक मत करो, ये important है. Find out summation xi minus x bar the bracket square. We have found out that answer. Replace the value. Get the value of s. करते सराना पटापट. Substitute in the value of t at 0.05. Use the table. Check the significance. Is that clear? Tell me, is that clear? Pakka? I'm expecting from your side reply me in the chat. Same type. मैंने अब तक वो solution बंद करके रखा है. Similar practice problem for you. It is with 9 items and hope so everything is in front of you. Again 9 items. No xi available है. Assumed population दिया है उन्होंने 47.5. सेम टाइप ऊपर जैसे हमने किया था. पक्का 100%. Substitute the values and get the answer. So this part will complete our small sampling and a small part is available, but I will not push you beyond your strength. Again 1 घंटा हो गया. We are keeping it for 1 hour session. So अगर कोई बच्चे बाद में भी वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा 1-2 घंटे का वीडियो नहीं होना चाहिए. It should be within the part. So कल मॉर्निंग मिलेंगे हम लोग 10 o'clock. प्लीज बी इन योर माइंड. ग्रुप पे अपडेट कीजिए, दोस्तों को बताइए. कल 10 बजे आ सकते हैं. एंड कल हम लोग इसका बचा हुआ जो डिफिकल्ट में से डिफिकल्ट पार्ट बाकी है कि डिफरेंस बिटवीन मीन
फॉर स्मॉल सैम्पलिंग, ये पार्ट हम लोग पहले एक आधे घंटे में करेंगे। एंड मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एक रिप्लाई भेजा था, या हमने कहा था कि एंड में क्रैश कोर्स करेंगे, लेकिन अभी तो सिनारियो नहीं लग रहा है। तो मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ या आपसे एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि हम लोग यूनिवर्सिटी के सारे मैथ्स के पेपर सॉल्व करके निकालेंगे। पहले मैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन वो पढ़ाऊंगा, एंड फिर आपको पेपर्स भेज दूंगा, आप घर पे उसे आराम से सॉल्व कीजिए। इनिशियली इट विल बी सॉर्ट फ्रॉम माय साइड। तो कल सुबह हम लोग करना चाहेंगे। सो कल सुबह का सेशन मस्त मिस मत कीजिए। क्लास के ग्रुप पे लिंक में आएगा, या अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो टू अवर क्लास साइट, यूट्यूब चैनल पे जाइए सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस पे, उसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को दीजिए, उन्हें बताइए सब्सक्राइब करने के लिए। क्या कहते हैं उसे, लाइक बटन दबाइए अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है। श्योर। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं हम लोग, कल मॉर्निंग इसके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, दैट्स फॉर द सेशन। थैंक यू मित्र। पक्का। बाय।